Welcome, guys. Welcome. So today is another live session for our discussions with regards to business opportunities, E2 visas, E1 visas, and all the complexities in navigating the whole procedures. So let me know how many people are joining. We'll just wait for a couple of minutes. So let the people join. Hello, everybody. Okay. So, guys, please join if you want to have any kind of discussions, any understandings, any points which you need a clarifications on. So, today is a time. It's a point. Let's have some understandings. Okay, so we'll just wait for a couple of minutes before we. Okay, let the people join. Welcome, guys. Okay. Yes, guys. Please join, and share with all of your family, friends, any members who want to have any discussions. So, okay, Muhammad Saleh, Assalamu alaikum, and Business Industries, Assalamu alaikum, Janab. Walaikum salam. Please explain E1 and E2 visa difference. Yes, Mr. Noor, I will definitely explain it. And here, Zubair, Salam, Bhaijan, Walaikum Assalam, sir. Okay, let's have more and more people live. Okay. Yeah. Okay, guys. So just to start, if you guys, whoever is joining, I mean, if you can just mention the name of cities and the country or places wherever you guys are joining from, थोड़ा सा मुझे idea हो जाएगा, and then we will start the discussions. Okay जी, here is Zubair साहब, हम दो दोस्त हैं और पास EU पास भी है 2 लाख यूरो. अभी आते हैं जी आपके सवालों पे जुबैर साहब. विल हैव अ डिस्कशंस. So I'm trying to आज इस वीडियो में I will try to address major of your concerns. जितने भी आपके सवाल होंगे I'll try to address as much as you can, and will. Okay, so Facebook user मुल्तान पाकिस्तान, मुल्तान दी पाक ज़मीन वाले हो. Welcome. All right, let me try and set it up the things. Okay. वेलकम. जल्दी से अपने सारे दोस्तों भाइयों सबको लेके आ जाओ यार. तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें रहती हैं. मोहसिन रजा, रहील भाई, आई लव यू टू सर. मोहसिन भाई. ओके.
Kashif from Pakistan. Welcome, Kashif. Multan. Nawab Shah. Very good. Welcome, Nawab Shah वालों. ये तो हमारे सबसे चीते हैं जी, सियालकोट वाले. सियालकोट वाले भाईजान. Bisnas Industry, Sialkot. Welcome, sir. Sialkot, I'm coming next week. Next week, inshallah, I'm coming to Sialkot. Sialkot, Lahore, Gujranwala, Faisalabad, Islamabad. So next week I will be there. Inshallah, we'll have a lot of discussions. अब्बास नौफिल भाई, कनाडा वीज़ा में डील करते हो? नहीं जी, मैं कनाडा वीज़ा में डील नहीं करता भाई, सॉरी. ओके. All right, One Trading, how are you, sir? Purvish from India. Welcome, welcome, Purvish. Mohammed Saleh, please visit Hyderabad. यार साले, I would love to. Actually, मेरे कराची वाले सारे जो है वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सारे लोग जो है वो नाराज़ हो रहे हैं. मैं अनफॉर्चुनेटली कराची का भी अभी तक प्लान नहीं कर पाया, हैदराबाद का भी नहीं कर पाया, बट मे बी वेरी सून I'll try to plan the whole trip for the south, and then we can definitely meet up. ओके जी. अब्बासी नौफल, बिजनेस वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम. ओके जी, इस पे भी आते हैं जी, बिजनेस वीज़ा के ऊपर भी. आई एड्रेस और कंसर्न्स. ओके, यहाँ पे क्या क्या चल रहा है? ओके. Want to know any business E2 business opportunities in Texas? USD 100 to $150,000 investment. Definitely जी, 100 में बहुत सारे. Okay, so Zubair, Frankfurt. I'm in Germany. Welcome, Zubair. Okay, I'm from Canada. Simran Singh, thank you for joining from Canada. Okay. Salam, brother. Walaikum assalam. Okay, sir, need your appointment in US on November. Yes, November definitely. You can go to the appointment link. Appointment links will be there on my website, startupbusinessbureau.com. It will be available on whichever the platform you are joining from, TikTok, Facebook, Instagram, all of the channels. There is a link in the bio, and you can get the appointment links, and you book your appointment. Come visit my office, and we'll have a chat. Abbasi Naufel, sir, your office. My office is Abbasi. I'm based in USA, Virginia. वर्जीनिया में मेरा ऑफिस है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है. सो एनी ऑफ द प्लेसेस. Okay, so here on the Insta, Mr. Daddy, where are you based? I'm based in Virginia, USA, sir. Okay. Okay, so now let's give it a quick start. थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, देन फिर आपके जो सवाल होंगे उनके ऊपर आते हैं. इंट्रो में बेसिकली just for my introduction, those who guys, I mean, usually mostly all of you know me by now. Can we apply green card? I need to visa. Okay. अच्छा, quick सा introduction दे देते हैं जी आपको. My name is Raheel Sheikh. I am based in Virginia, USA. और मेरी फर्म का नाम है स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो. हम लोग कंसल्टिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं उन तमाम इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. E1, E2, L1, EB5 वीजा प्रोग्राम्स को जो है प्रोसेस करना चाहते हैं. तो वी आर not immigration attorneys, we are business consultants, and we help you setting up your businesses in lieu or in perspective of qualifying for business visas. E1, E2 वीजास क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो इसका क्विक सा बैकग्राउंड जो है वो आपको बता देते हैं. E1 बेसिकली इज अ ट्रीटी ट्रेडर वीजा. पहले हम ट्रीटी को समझ लेते हैं कि यूएस हैज साइंड ट्रेड ट्रीटी, यानी दो कंट्रीज के दरमियान में ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है जहां से आप बायलैटरल ट्रेड जो है वो कर सकते हो.
So there is a treaty signed with a lot of countries in the world, not for everybody. For example, usually जो मेरे target audience है Southeast Asia में, तो India and China are unfortunately not the part of the treaties, but Pakistan, Sri Lanka, there are Bangladesh, there are a lot of those countries are part of the treaty countries. इसी तरह Canadian जितने मेरा client चला है, Canada is a part of treaty, UK is a part of treaty, Australia is a part of treaty. So all of those people who want to migrate to USA from Canada, Australia, UK, Pakistan, Bangladesh, so all of those they have a treaty signed. E2 and E1 visas are for those. सो बेसिकली इन दोनों वीजास का जो ओवरव्यू है वो ये होता है कि E1 वीजा इज अ ट्रीटी ट्रेडर वीजा। ट्रेडर में ट्रीटी ट्रेडर वीजा से क्या मुराद होती है कि बेसिकली इधर इट्स अ प्रोडक्ट ट्रेडिंग और सर्विस ट्रेडिंग। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की ट्रेड कर रहे हो और अपनी ट्रीटी कंट्री से, जैसे अगर आप कनाडा से हो तो आप कनाडा में हो, या अगर पाकिस्तान में हो तो आपके पाकिस्तान में आपका सेटअप है, और आप अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इधर ऑफ द थिंग्स, ठीक है, आप यूएसए के साथ करते हो तो यू माइट बी एलिजिबल फॉर ट्रीटी ट्रेडर वीजा विच इज E1 वीजा। तो जैसे पाकिस्तान से बैठे हुए जितने सियालकोट वाले, गुजरांवाला वाले, वजीराबाद वाले, फैसलाबाद वाले, ऑल दोज इंडस्ट्रियल सेगमेंट के जो लोग हैं, जो प्रोडक्शंस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड दे एक्सपोर्ट देयर मेजर गुड्स टू यूएसए मार्केट, दोज ऑल पीपल आर क्वालिफाइंग फॉर E1 वीजा। इसी तरह जो डिजिटल बिजनेसेस वाले हैं सर्विस में, चूंकि E1 में आप प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, तो एनी सर्विस रिलेटेड जो आपकी एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स हैं, जैसे आपके आईटी कंपनीज हैं, डिजिटल वेब डिजाइनिंग वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, ई कॉमर्स वाले हैं, कॉल सेंटर वाले हैं, एनी आउटसोर्सिंग एजेंसीज वाले हैं, बैक ऑफिस सर्विस वाले, अकाउंटिंग वाले, फाइनेंस वाले, तो ऑल दोज जिनका सेटअप पाकिस्तान में है या कनाडा में है या यूके में है, और आपका जो मेजर क्लाइंटल है वो अमेरिका में मौजूद है, तो आप भी E1 ट्रीटी ट्रेडर के कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हो। ये जो भी लोग सर्विस या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उनके लिए E1 ट्रीटी ट्रेडर वीजा है। जो सर्विस में या एग्जिस्टिंग बिजनेस में नहीं है उनके लिए E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा है। E2 इन्वेस्टर वीजा क्या होता है कि इसमें आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करनी होती है, और अमेरिका में आप लोकली यूएसए के किसी भी बिजनेस में आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होते हैं। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर सकते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के पार्शियल शेयर जो है, मेजॉरिटी शेयर जो है वो परचेज कर सकते हो, या कोई फ्रेंचाइज स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 4 तरह के आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। आप इनमें से किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स करके उस इन्वेस्टमेंट्स की बेस पे उस E2 वीजास को क्वालिफाई कर सकते हो। अब बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली वेरी करती है आपके बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंगली, कि जैसा बिजनेस आपने स्टार्ट करना है वैसी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई रिटेल स्टोर टाइप का, रेस्टोरेंट और स्टोर टाइप का कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट समवेयर 100 टू 150 एक आइडियल रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे यहाँ के लोकल सर्विसेज हैं, होम सर्विसेज हैं, या आईटी सर्विसेज हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, तो एनीथिंग बिटवीन 50 टू 100,000 का बजट जो है वो रिकमेंडेड है। इसी तरह रिटेल में अगर किसी बड़े कैपिटल इंटेंसिव रिटेल बिजनेस मॉडल में आप जाते हो, जैसे गैस स्टेशन हैं, ट्रकिंग है, इस तरह की बिजनेस में जाते हो, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 2 लाख $2.5 लाख मिनिमम जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का बजट होना चाहिए। तो दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट बजट वुड वेरी, और इसके अकॉर्ड इसी तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो डिसाइड करोगे। बिजनेस कैटेगरीज की क्या लिमिटेशंस है? बिजनेस कैटेगरीज की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप प्रैक्टिकली किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो, एक्टिव होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। तो लीगली यूएस आपको जिन बिजनेसेस को अलाउ करता है वो बिजनेस आप कर सकते हैं, और एक्टिव होना चाहिए। यानी एक्टिव से क्या मुराद है कि पैसिव बिजनेस, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एक पैसिव बिजनेस की कैटेगरी है। तो आप पैसिव बिजनेस आपका नहीं होना चाहिए, एक्टिव बिजनेस हो एंड लेजिटिमेट बिजनेस हो। तो ये आपकी बिजनेस कैटेगरीज आ गई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स आ गई।
अब इसके प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो प्रोसीजर्स में आपको सबसे पहले जो है वो आपको अपना यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी होती हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, आपका एलएलसी या एस्कॉप या जो भी आपने कंपनी रजिस्टर करनी है। फिर आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन, ईआईएन रजिस्ट्रेशन वो करनी है। आपने अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करना है। उस बैंक अकाउंट में फिर आप अपने थ्रू प्रॉपर चैनल वाइट सोर्सेज डिक्लेयर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने ट्रांसफर करनी है। फिर वो इन्वेस्टमेंट से आपने बिजनेस जो भी आपने परचेज करना है या स्टार्ट करोगे या परचेज करोगे या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, तो वो बिजनेस आप उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट करोगे। इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर आपकी जो पूरा बिजनेस प्लान लिखे जाएंगे, बिजनेस फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज बनेंगी, आपके एप्लीकेशन पैकेट तैयार होगा, बिजनेस प्रोफाइलिंग होगी, आपकी इंडिविजुअल क्लाइंट प्रोफाइलिंग जो है, इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग वो तैयार होगी। एंड देन फिर आप जो है वो वीजा के लिए अप्लाई करोगे एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो एम्बेसी में जब आप अप्लाई करोगे वहां पे आपका बिजनेस इंटरव्यू होगा। अच्छा, दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं एप्लीकेशंस के। एक आपका ये है कि आपने पूरा बिजनेस रेडी कर लिया और रेडी करने के बाद आप जो है वो एम्बेसी में अप्लाई करो, जहां से आपको ई टू वीजा स्टैंप होगा। और वीजा स्टैंप के बाद आप यहाँ पे फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो। फैमिली में आप, आपकी वाइफ यानी स्पाउस जो है, और आपके बच्चे जो 21 ईयर्स से बिलो के किड्स हैं वो अलाउड है। दूसरा प्रोसीजर एप्लीकेशन का ये होता है कि अगर आपके पास B1 B2 वीजा मौजूद है, वैलिड वीजा, तो आप B1 B2 वीजा लेके अमेरिका में आ जाओ। यहाँ पे आप, आपका जब बिजनेस तैयार होगा तो यहाँ से आप स्टेटस चेंज जो है USCIS के थ्रू आप अपना जो स्टेटस है वो चेंज कर लोगे E2 में। मेजर डिफरेंस जो है बेसिकली E2 वीजा और E2 स्टेटस में या E2 एम्बेसी प्रोसेसिंग में और USCIS के थ्रू प्रोसेसिंग में, वो ये होता है कि स्टेटस चेंज में आप लैंडलॉक होगे लेकिन आपका इंटरव्यू नहीं होगा। वीजा एम्बेसी से प्रोसेस करोगे तो आपको मल्टीपल एंट्री वीजा होगा, आप इन एंड आउट कर सकते हो, लेकिन आप जो है वो आपको वीजा इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये आपका स्टेटस का डिफरेंस है। प्रोसीजर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बात की जाए तो ऑन एवरेज वेरी करेगा बिजनेस टू बिजनेस में कि किस तरह का बिजनेस में कितना टाइम लग रहा है। बट आपके ऑन एवरेज 5 to 6 मंथ्स टाइम लगता है वीजा बिजनेस को रेडी करने में। और जब बिजनेस रेडी हो जाता है तो अम्बेसी में सबमिशन के बाद तकरीबन 2 से 3 महीने अम्बेसी लेती है। तो ये आपका जो है वो यानी टोटल 6 to 8 मंथ्स का टाइम पीरियड है पूरे प्रोसीजर्स का। तो इस हिसाब से आप अपना जो है वो प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया E1 और E2 का प्रोसीजर। E2 से ग्रीन कार्ड का राउट जो है नहीं जाता। E2 इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा, तो इसमें ग्रीन कार्ड की तरफ नहीं जाता। ग्रीन कार्ड के लिए आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव राउट्स को जंप करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, और फिर आप जो है वो ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हैं। जैसे बिजनेस बेस पे बहुत सारे ग्रीन कार्ड के ऑप्शंस मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस तरह के आपको ग्रीन कार्ड के डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जब आप वंस यू आर हेयर, once you have a social system, so set up based in America, तो उस बेस के ऊपर आप ग्रीन कार्ड में जा सकते हैं। बट इफ यू वांट टू गो डायरेक्टली ऑन द ग्रीन कार्ड राउट, देन दीज आर द नॉट वीजा ऑप्शंस फॉर यू। फिर आपको EB5 में जाना पड़ेगा, उसमें 1.05 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। आपको वो इन्वेस्टमेंट करके देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन गो ऑन बेसिकली द ग्रीन कार्ड ऑप्शन। फॉर पीपल फ्रॉम द ट्रीटी कंट्रीज इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना जो है वो पहले E2 कर ले, ताकि स्मॉल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स है, इस इन्वेस्टमेंट्स की बेस पे E2 करो, यहाँ पे आ जाओ, अमेरिका में मूव करो, बिल्ड अप योर रेजिडेंसीज, बिल्ड अप योर होल प्रोफाइलिंग, एंड देन बेस्ड ऑन दैट लेटर ऑन इफ यू डिसाइड टू मूव टुवर्ड्स द ग्रीन कार्ड, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बट दैट्स अ मोस्ट इजीएस्ट, कन्वीनियंट एंड फास्टेस्ट राउट टू एंटर एंड पेनिट्रेट इनटू द US मार्केट। तो ये है जी आपका जनरल जो पूरा बैकग्राउंड है, जो कॉन्सेप्ट है E1 एंड E2 वीजास को लेके। बिजनेस इसमें की होती है कि बिजनेस आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो बिजनेस होता है। बिजनेस आपका सही से बना होना चाहिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना होना चाहिए। इसमें वीजा रिजेक्शन या वीजा अप्रूवल के जो चांसेस हैं, ये एक कॉमन कंसर्न होता है। तो बेसिकली जो USCIS का अप्रूव्ड जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली तकरीबन 90% जो है वो इसका अप्रूवल रेट है। B1 B2 वीजा के कंपैरेटिवली जब E1 E2 की हम बात करते हैं
तो E1 E2 is meant to be given, ये it's meant to be approved. एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं USCIS की तरफ से, एक पूरा जो है वो प्रोसीजर्स मौजूद है कि आपने अपने बिजनेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से जो है वो प्रोसेस करना है। एंड द मोमेंट यू प्रोसेस, यू टेक केयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, तो आपका वीजा यूजुअली मिल जाता है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में, if by any chance you do not even get the visa approved at the day one or at the first try, so US embassy will give you the reasons, and they will put objections, which we officially call it as an RFEs, the request for further evidences. Or us RFEs mein they ask for a further explanation, they ask for any additional documentation, additional clarification, whatever the case might be, और उनको resubmit करके, उनको redo करके, उनके सारे objections को overcome करके, we can resubmit the application and get the your visa approved. So basically it's kind of a secured procedures as long as you follow the embassy requirements. तो आपकी investment जो है वो safe रहती हैं। इसके अलावा आपको what are the basics which you need to know, इसमें आपकी फैमिली ऐड होती है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ, किड्स जो बिलो 21 ईयर्स के हैं, जो 21 से अबव हैं, वो इस प्रोग्राम पे फॉल नहीं करते। उनको अपना कोई इंडिपेंडेंट, या तो वो अपना इंडिपेंडेंट E2 केस करे, या वो डिफरेंट वीजा कैटेगरी, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वीजा में जाएं, या फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन पे जाएं, बट दे कैन नॉट ज्वाइन यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ऑलराइट गाइस, okay, so now let's start jumping towards the some of your comments. Okay, Mr. Abbas Shah is saying, what is the business opportunities for Pakistanis in USA, and what type of visa is required? How much investment is required for the business visa? And are you talking about the work sponsorships? Now, Abbas, I have just addressed this whole concern. We are talking about E1 and E2 investor visas. We are not talking about the employment based or the sponsorship based visa programs, because that's not my scope of services. That's not falls under the business category. So I only take care of the businesses for business visas. How can I book one-to-one appointment? Omar, if you are live on the Instagram, so there will be a link in my bio, and there will be an appointment link. You can probably go, or even you can go to my website and book an appointment and a consultation. LLC is preferred or S corp for E2? Basically, LLC, that's a tricky question. LLC and S corp, it has nothing to do with your E2. For E2, LLC and S corp, C corps, all of the categories are accepted, as long as whatever you guys are comfortable with. You need to understand the basic difference कि LLC और S corp में जो difference है, वो आपकी tax purposes के लिए है। तो अभी मैं टैक्स की डिटेल डिस्क्रिप्शंस में नहीं जाता कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस। जस्ट ए वन जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है कि एलएलसी में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पड़ता है, लेकिन एस कॉर्प में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं पड़ता। बट usually as a practice, LLC is most recommended because it's easy to manage for a newcomer जो फ्रेश बंदा अमेरिका में आ रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसको ईज ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस एंड मैनेजिंग द कंपनी एंड द लीगल ऑब्लिगेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए LLC is preferred, but there is a threshold. Let's say usually it is said कि अगर आप मिनिमम $100,000 नेट प्रॉफिट्स को क्रॉस करते हैं, then it is better for you for a money saving perspective. Then you need to shift or you need to elect as an S corp on your LLC, or you need to shift your LLC to an S corp. तो initial में startup businesses में, startup programs में LLC is the most convenient, easy route to go with as compared to the S corp. Okay, so now who are here? Let's go. Okay. Oh, there are a lot of people. Thank you guys for your support. Okay. Salam, brother. Walaikum assalam.
Okay, so Zubair, your question was हम दोनों को वीजा मिल जाएगा with family. Sir, yes, E2 visa, as I just explained, कि E2 visa is for the family, husband, wife, and kids below 21 years of age. New Zealand citizen living in Canada on work permit, driving cross border semi to USA. How to move US? Mr. Trucker, that's what your name is, and Mr. Trucker, E2 visa is the option for you. आप अमेरिका में E2 visa की बेस पे यहाँ पे मूव कर सकते हैं, and you can go with it. Frankfurt, Germany, welcome. You want to know about E2 opportunities in Texas. $100 to $150,000 may E2 opportunities in Texas, E2 business opportunities. As I've mentioned, any kind of a business is accepted. Depend कि आप क्या करते हैं. अगर आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, तो आप कोई सर्विस टाइप की इंडस्ट्री जो है वो पिक कर सकते हैं. अगर आप किसी रिटेल बैकग्राउंड से हैं, या आप स्किल्ड बैकग्राउंड से हैं, तो आप अपनी फील्ड, अपनी रेलिवेंस के हिसाब से स्टोर खोलें, ग्रोसरी स्टोर खोलें, रेस्टोरेंट खोलें, होम सर्विसेज की बिजनेस करें. आप जो है वो किसी भी तरह के बिजनेस जो है वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. Can we apply green card on E2 visa? No. As I mentioned, E2 is a non-immigrant visa, तो E2 पे आप green card नहीं straight away apply कर सकते, but E2 would open up a lot of other opportunities and other options जो आपको green card की तरफ लेकर जा सकते हैं. Turkus, please reply. Yes, sir, I have already replied just now. And Bhai, I want to come US and do business there. How can I consult with you? I do have a B1, B2. Imran Ali Chaudhary Saab, you are on the TikTok, and just go to the link in my bio. There are the options available. Consultations के लिए आप book कीजिए, and let's have a chat together. Mr. Sanjeev, if I'm selling on Amazon USA from India, Sanjeev, India is not a part of treaty country, so even E2 options is not for you. But if you have an existing established business in India, so you might consider L1 visa. L1 is basically the branch of an international company which you can open. अगर आपका business एक certain amount of threshold से जो है वो above business करता है, एक क्वालिफाइंग बिजनेस है, कपल ऑफ एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में मौजूद हैं, तो यस यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड कंसिडर द L1 वीजा ऑप्शन फॉर इट, बट E2 इज नॉट फॉर इंडिया अनफॉर्चुनेटली. Okay. Mr. Sudhir Puri, can anyone change E2 status to E2 visa later? Yes, E2 status से E2 visa आपका चेंज नहीं होता. बेसिकली E2 स्टेटस जब आप अमेरिका में बैठ के आपने अपना प्रोसेस किया, so you get E2 status. The moment you take an exit from America, किसी भी वजह से जब भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है, अपने होम कंट्री जाते हैं या किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो E2 स्टेटस एक्सपायर हो जाता है. Now once that expires, in order to come back to America, you need to apply द E2 वीजा फ्रॉम यूएस एम्बेसी अगेन. तो बेसिकली आपको आने से पहले, वापसी से पहले आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी से. ओके. What number should I call you? I am in the New Jersey. Okay, sir, the numbers are available on the website. It's coming on the, if you go to my YouTube, it's available on my, this live feed also. The company board numbers are there. The WhatsApp number is there. Appointment links is there. You can definitely, give a call and we can have a chat. Can I apply over my okay? Now FN says I am Pakistani citizen working in South Korea. Can I apply E2 if I invest in UK $70,000? Yes, sir. Definitely. If you are from Pakistan, so irrespective कि आप what is your resident status, अगर आप Middle East में हैं, किसी भी even non-treaty country में, if you are residing but your current passport, current citizenship is from Pakistan, which is a city, which is a treaty country, so you can apply E2 based on your investments. Okay, so now let's come to this channel. And okay, Mr. Noor says, please explain E1 and E2 visa difference. I just explained. One is a treaty trader visa, one is a treaty investor visa. Okay.
सर अब्बासी बिजनेस वीज़ा यूएसए प्रोसेसिंग टाइम सर 5 से 6 महीने लगते हैं बिजनेस सेटअप करते हुए बिजनेस को प्रिपेयर करने में एप्लीकेशन पूरी को रेडी करने में एंड देन 2 to 3 months एम्बेसी टेक्स द प्रोसेसिंग टाइम सो ऑल इन ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन एवरेज 7 to 9 months टाइम Sialkot must seen me. Mr. Joker 105. Yes, sure, Mr. Joker. I am coming here to see all of you. Whoever is there available want to have a discussion. तो आप मेरे बायो में जाइए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए and we can have a chat together. Okay. Your appointment. Okay, ये बात होगी थी इनसे. Okay, now let's go down, Abasi. Uh, your office location in Islamabad. Basi, my office location in Islamabad is World Trade Center, which is Giga Mall, DHA 2. So DHA 2 में World Trade Center Giga Mall में third floor पे मेरा office है. You can book an appointment and go there. Mr. Hassan Awan, I have seen your videos. You are providing such a productive information. Thank you so much, Hassan. Thank you. That's the purpose to give you the sufficient information so you guys can have a better understanding. Facebook user, hello. The question is, which will be good, adjustment of status or take visa from local embassy? Okay, that's a very detailed question. As I mentioned, E2 status change में you will be landlocked. E2 visa में you have a mobility, you have a freedom to travel. So depending on the on your objectives, अगर आपको अगले 2 साल तक travel करने की जरूरत नहीं है, then it's better to do the status change as long as you have a B1 B2 visa with you. अगर आपके पास B1 B2 मौजूद है और आपको 2 2.5 3 साल तक आपको travel नहीं करना, then you can definitely do the status change. But अगर आपके पास B1 B2 मौजूद नहीं है या आपको constantly travel करना है back home, कोई भी आपकी commitments हैं, businesses हैं या family commitments हैं जिनकी वजह से आपको travel करना पड़ सकता है, then you need to have the visa. कितना टाइम लगता है वीजा में सर? 7 से 9 महीने. Okay, जी. Now Ali Sombro says handyman business can qualify for E2. Absolutely, जी. Handyman business can qualify for E2 visa, and that's a great business opportunity if you want to consider. खौब आपकी फीस, मेरी फीस जी डिपेंड करती है, वेरी करती है बिजनेस प्रोग्राम्स कंसल्टिंग सर्विसेज के हिसाब से. सो देयर इज इट वुड वेरी एंड वी वुड डिटरमाइन दैट वंस वी डिस्कस विद यू, वंस वी अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है, कैसा बिजनेस करना है, किधर करना है. तो बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरियाज वी डिटरमाइन द फीस. Okay, so technology, innovation, and career counseling. Here is Sayyid Asif Munir. Welcome, Sayyid Asif Munir Saab. And here is Manal Zafar. Welcome. Thank you. Okay, Ali Aliyar Kunjo, if I pronounce it well. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for this information. You welcome, sir. You are more than welcome. Okay, ji. The next. Okay, Mr. Ali again. I am Zakir from India. I have one question. क्या विजिट वीजा से पीआर में कन्वर्ट हो सकती है? अगर यस तो कितना टाइम? सर नहीं सर, विजिट वीजा से देयर इज नो I mean that's very vague question to be very honest Ali, because पीआर में कन्वर्ट, पीआर से आपकी क्या मुराद है? ग्रीन कार्ड में? तो ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता. ग्रीन कार्ड के डिफरेंट सारे राउट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी को कंसल्ट करना पड़ेगा. ही कैन गाइड यू कि व्हाट आर द बेस्ट राउट्स अवेलेबल जो आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्वालिफाई कर रहे हो ग्रीन कार्ड के लिए. अगर किसी बिजनेस का एक्सपीरियंस ना हो तो होप अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन. अगर आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो E2 डज नॉट रिक्वायर यू टू हैव अ बिजनेस एक्सपीरियंस. इसकी कोई मैंडेटरी इसका क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस होना जरूरी है. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन आपके पास ये बिजनेस कैपेबिलिटी जरूरी है कि आप जो एक बड़ी अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख $1.5 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके में वो कैपेबिलिटीज होनी बहुत जरूरी है कि आप उस बिजनेस को मैनेज कर लेंगे. So that is something which is more important than even having a business.
Sir, I am a Canadian citizen. Driving truck, can I move to USA? Yes, you can. अगर बॉर्डर क्रॉस करके बंदा आया हो तो कितना टाइम लगता है ग्रीन कार्ड का? नहीं भाई, बॉर्डर क्रॉस करके जो आता है उसके पास ग्रीन कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। अपने इमिग्रेशन अथॉरिटी से कनेक्ट कीजिए। आई डोंट नो कि उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। माय नेम इज मोहम्मद फहद फ्रॉम सियालकोट, पाकिस्तान। वेलकम फहद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। काशिफ चौहान, ओके, काशिफ चौहान, अस्सलाम वालेकुम। राहिल भाई, मैंने कुछ दिन पहले ही एलएलसी ईआईएन बैंक अकाउंट बनवाया है, बट अब बिजनेस कौन सा कर चौहान साहब, आपने एलएलसी बनाई है तो बिजनेस का कुछ सोचा होगा आपने, किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं? सर, बिजनेस आप कोई भी कर सकते हैं। मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता, मुझे आपका आपकी स्किल्स नहीं पता, आपकी एक्सपर्टीज नहीं पता, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जब मुझे आपका बैकग्राउंड ना पता हो। क्या आप देखिए, हर बंदा हर तरह का बिजनेस नहीं कर सकता। अगर मैं किसी एक डॉक्टर को बोलूं कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर लो, तो चांसेस आर कि वो नहीं मैनेज कर पाएगा। इसी तरह एक इंजीनियर को बोलूं कि हेल्थ केयर का कोई सेक्टर खोल लो, डजंट मेक ए सेंस। बैंकर जो है वो होम सर्विस का बिजनेस नहीं ओपन कर सकता। आई मीन, कर लीगली तो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली उनके उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो आपको अपने हिसाब से हर बंदे को खुद पता होता है। जिसने $1 लाख लगाना है पाकिस्तानी, अगर आपसे मैं देखे तो आज की डेट में 3-3.5 करोड़ रुपया बनता है। इट्स नॉट अ स्मॉल मनी, इट्स अ बिग मनी। तो इतना पैसा लगाना है तो आप मेरे बताए हुए बिजनेस पे आप पैसा कैसे लगाओगे? डजंट मेक अ सेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि कोई भी आपको बोलेगा और आप उसके लिए 3 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो बेटर यही होता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज देख सको। हाँ, हम एज अ कंसल्टेंट एंड एडवाइजर, माय जॉब विल बी कि आप मुझसे डिस्कस करें कि यार मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ और मेरे पास ये स्किल्स हैं, तो क्या ये बिजनेस की मार्केट अच्छी है, इस बिजनेस का स्कोप अच्छा है, तो आई कैन गाइड यू, आई कैन एडवाइस यू ऑन दोस। ये आप मुझे 2-3 ऑप्शन दें कि यार इन दोनों में से कौन सा बिजनेस अच्छा है, तो आई कैन प्रोबेबली एड्रेस यू इन अ मोर बेटर वे, अगर मुझे आपका कोई बैकग्राउंड पता हो। Okay, so now the next question comes in. After change of status, can I apply the visa for my family from Pakistan? Yes, you can apply. Okay. शेख नोमान अल जहरी, सर मुझे मिनरल वाटर में भी ही वांट्स टू से मिनरल वाटर का बिजनेस करना है यूएसए में, क्या ई2 के लिए बेस्ट रहेगा? जी शेख साहब, मिनरल वाटर का बिजनेस ई2 के लिए तो ठीक रहेगा, बट मुझे नहीं पता आपकी कितनी एक्सपर्टीज है, यहाँ पे आप कितना बड़ा प्लांट लगाने जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान में तो मिनरल वाटर छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज में भी जो है वो बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे आपको उसके लिए अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज हेल्थ एंड सेफ्टी बीच में इन्वॉल्व है। आपको वाटर के अप्रूवल्स होंगे, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास अच्छा लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट बजट है तो यस, आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। Okay, this is a $1 million question. How to transfer USD from Pakistan to USA for E2 business investment? जी, मनी ट्रांसफर का जो राउट है, इट हैज टू बी अ क्रिस्टल क्लियर बैंक ट्रांसफर राउट। बिल्कुल लेजिटिमेट राउट होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपका सोर्स ऑफ फंड्स होना चाहिए, मनी ट्रेल्स होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान से काफी डिस्टर्बेंस है पैसे ट्रांसफर होने में, बट इट डज नॉट मीन कि पैसा ट्रांसफर होता नहीं है। $10,000 की ट्रांजेक्शन में आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 100,000 की एनुअल लिमिट है। आप इतने पैसे जो है वो अमेरिका में ट्रांसफर कर सकते हैं, और यू नीड टू प्रोबेबली सिट विद योर बैंक मैनेजर, यू नीड टू डिस्कस विद हिम, एंड ही विल गिव यू सम बेटर ऑप्शंस हाउ टू ट्रांसफर। Of course he would say no in the beginning, but actually, I mean, if you talk to him and explain him the situation, there are amounts transferring every time and every day. और अदरवाइज जो है वो वेस्टर्न यूनियन इज आल्सो अ गुड ऑप्शन, तो वेस्टर्न यूनियन भी आप यूज कर सकते हैं। Okay, now also a tax C certificate received. Tax C certificate received. Good, Mr. Chauhan. I think आपने पहले भी पूछा था कि कौन सा business. तो now you are ready. Business account आपका ready है, company ready है, tax ready है. Now you just need to decide what business, and then if you want to move for the proceed for the visa programs.
ओके, स्टेटस चेंज के बाद फैमिली की अप्रूवल का मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? नहीं, स्टेटस चेंज के बाद आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कुछ भी। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही करनी है, जो स्टेटस चेंज से पहले अपनी अपनी एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए करनी है। और उसके लिए फैमिली के लिए अलग से एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपका बिजनेस मार्जिनल नहीं है। मार्जिनल बिजनेस से क्या मुराद होती है कि इसमें आपकी इनकम पोटेंशियल इतना हो कि वो आपकी फैमिली के लिविंग एक्सपेंसेस को बेयर कर रहा है, तो फिर आपको मजीद कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन अगर कोई छोटा सा बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, बाद में अब आप जो है वो फैमिली को भी बुलाना चाह रहे हैं, तो देन यस डेफिनेटली फिर आपको उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। Manjot Singh says, how much investment we have to do? Usually investment would vary from business to business, but as I said, I mean, जो ideal ballpark figure है small scale के medium scale के businesses की, वो 100 से $150,000 की एक safe investment amount है. Okay. Noman Naim Saab, those working in Qatar, they want to take E2 for wife. Then what will be the possible options, because husband not want to quit the job all of a sudden? Yes, Noman, that's very common. I have been seeing this, and I've been doing and assisting these kind of investors, क्योंकि मिडल ईस्ट में बैठे हुए कतर, कुवैत, सऊदी, बहरीन, दुबई, there are a lot of my clients who are well established. They are doing jobs, they are doing pretty good, spending good decent life in Middle East. But as a plan B or a future plan for the kids, you might need to consider opening up a business or migrating to America, because Middle East may eventually at one day you have to get out of the country once you get once you are done with your jobs or with your current endeavors. तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, वाइफ के नाम पे E2 बनाइए, आपको स्पाउस वीजा मिल जाएगा, यू कैन गो एंड हंट फॉर द जॉब्स, बच्चे भी माइग्रेट कर सकते हैं, एंड योर वाइफ कैन मूव हियर, शी कैन मैनेज द बिजनेस, और even if you don't want to manage the business, you can hire some business managers, as that is one of the service for us also. हम लोग भी services provide करते हैं, we manage the businesses for our investors. If that is something which you want to discuss with the team, and we can see if there is a potential collaboration chances. ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, अतारिया हिफ्जा, यस, इफ यू हैव अ मेडिकल रिक्वायरमेंट, दैट इज अ नॉर्मल B1 B2 वीजा, आपको मेडिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, यू कैन सर्टेनली गो एंड अप्लाई फॉर अ मेडिकल वीजा. Okay, Mr. Galib says, me and my family has B1, B2, but do not have a money to invest. What are my options? Awesome, sir. Your option is you come here, B1, B2, enjoy, and travel back, and that's it. I mean, if या फिर आप आके जॉब अप्लाई कर लीजिए, कंपनीज में ट्राई कीजिए, अगर कोई स्पॉन्सरशिप आपको दे दे, जॉब ऑफर दे दे, एंड देन बेस्ड ऑन द स्पॉन्सरशिप यू कैन प्रोबेबली कंसिडर द वीजा ऑप्शंस. सर मुझे मिनरल वाटर का प्लान करना, ये तो बात होगी. मैं अच्छा, शेख प्लीज, आई मीन टू एवरीबडी आई वुड से प्लीज पुट द कमेंट्स one time, because if there are repeated content comments, then I will pass on, and then उसमें से कोई important सवाल जो है वो किसी का छूट जाएगा. ओके, मोहम्मद साले, व्हाट्स द स्कोप ऑफ सोलर वर्क? सोलर वर्क का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है जी. सोलर वर्क इज मोस्टली इवन एनकरेज्ड बाय द स्टेट्स. हर स्टेट की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट्स है, दे आर आल्सो इंकरेजिंग. डिपेंड्स कि आपने करना क्या है, बिकॉज इन सोलर यू हैव एन ऑप्शन टू बिल्ड अप अ सोलर फार्म एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई टू द गवर्नमेंट और टू द नेबरहुड्स. और आप सिर्फ सोलर की सप्लाई और जो टेक्निकल सर्विसेज हैं उनकी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, यू कैन गो विद दैट काइंड ऑफ अ राउट, और you can become a whole solar supply company. So there, or solar even product supply also. So there are different options in the solar work, and yeah, I mean, based on your budget, every of these processes have a different budget. So आप अपने budget के accordingly you can definitely consider the solar work. I work in the solar industry here in Pakistan. Very good. Come and do the work here, sir. Joker, when Sarji Sialkot, when you come see me? Yes, sir. I am coming to Sialkot in the next week. आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए ताकि हमें आपकी लोकेशन चीज़ें पता हो. मेरी टीम आपको लोकेशन भी बता देगी सियालकोट मीटअप की. यू आर मोर देन वेलकम. आप आ जाइए. आई थिंक 13 या 14 को है प्रोबेबली सियालकोट का ट्रिप, एंड देन हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं.
Okay, Naman name E2 and B1 B2 we can keep together. Yes, you can keep together. If you already have a B1 B2 और आपका E2 visa stamp हो जाएगा, तो you would have the both visas active on your passport. If I change status, okay, Hassanan Naman, if I change status in USA, how my family can join me? If you change status, you apply your family from the US embassy, अगर वो पाकिस्तान में है या back home है, so you can apply for their visas. Once they get visas, they can join you. Okay. Energy business consulting E2. Yes, sir. Consulting and even energy consulting, and that's a good business. Depends on your scope. But consultings are generally, they are all welcome. Okay. Okay. So which business is good to start small? Dirham and see North Carolina. Oh, okay. Durham, North Carolina, Jacksonville, Florida, or any other city. Honestly, I mean, there is no difference. I mean, it all depends on your preferences. अगर आपका कोई जानने वाला, for example, अगर आप Jacksonville की बात कर रहे हो या even Durham, North Carolina की भी बात कर रहे हो, if you have somebody there who can assist you, who can support you once you are coming here, then that's a perfect state. So basically, until and unless you are very specific industry, जिसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो यू शुड प्रेफर सम स्टेट्स व्हिच हैव पोर्ट्स अटैच्ड टू दैट. अगर आप आईटी के बिजनेस में हैं तो आपको किसी ऐसी स्टेट्स में जाना है जहां पे आपको आईटी के सेगमेंट ज्यादा मिल सके. जैसे हमारे वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी में बहुत बड़ा आईटी सेटअप्स हैं, कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में, टेक्सास में, सो दो न्यूयॉर्क में. सो दो आर द स्टेट्स जो जहां पे आपको रेलिवेंट आईटी के ज्यादा जो है वो एम्प्लॉय वर्कफोर्स मिलेगी. बट अदर देन दैट बाकी नॉर्मल जो डे टू डे के बिजनेसेस हैं वो आप यू ओपन अप इन एनी स्टेट, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑल सेम. Kashif Chauhan, I'm related to the construction industry. Yes, sir. Very good. If you are related to the construction industry, come and do the construction work. Handyman services, property maintenance, property management services. The same construction business is a great one. I'm also established a e-commerce store in USA like Shopify. Yes, you can do the e-commerce. E-commerce is a great business also. इसमें आप जब वो e-commerce के business model में आप इसमें wholesale का model, आप इसमें private labeling का model, whatever you feel comfortable, you can definitely go. How's the business for the gas station? Is it profitable? Of course, gas station is a profitable business, at least for now. In the coming future, it's a diminishing industry because EV की evolvement के साथ आने वाले 5-7 years में 10 years time में it's a diminishing industry. The gas station का workload कम हो जाएगा, but even standing today, it's I mean, depend again. Not all the gas stations are profitable for sure. There are many losing money, but there are many minting money as well. तो depending कि आप लोकेशन क्या ले रहे हो, स्टेट कहाँ पे ले रहे हो, और किस प्राइस पे ले रहे हो, यानी किस वॉल्यूम का बिजनेस है. अगर आप 70,000 का या $1 लाख का छोटा गैस स्टेशन ले रहे हो तो डेफिनेटली इट इज लूजिंग मनी, इट विल नॉट मेक मनी फॉर यू. बट अगर आप लेट्स से $8 लाख का, $6 लाख का गैस स्टेशन ले रहे हो तो इट विल मेक वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एज वेल. तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस वॉल्यूम. What's the possibility of service sector? Services sector are the best sectors. All those people जो मुझसे मशवरा पूछ रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मैं आपको इजी और कन्वीनियंट बिजनेस ऑप्शंस बता देता हूँ जो मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शंस हैं यूजुअली एज अ न्यू कमर जो ज्यादा सूटेबल रहते हैं. दैट इज बेसिकली होम सर्विसेज का बिजनेस. रिटेल सेगमेंट, आई मीन आई माइट गिव यू अ बाइस्ड ओपिनियन बिकॉज आई एम फ्रॉम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड, और रिटेल बिजनेसेस को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता until and unless you have a very specific niche. I prefer service business, और सर्विस बिजनेस में होम सर्विसेज की इंडस्ट्री is one of the most leading and revolutionary industry in America. होम सर्विस में आपके पास होम मेंटेनेंस, हैंडीमैन, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, क्लीनिंग सर्विसेज, कार वॉश, आपके पास जो है वो विंडोज क्लीनिंग, डेक क्लीनिंग, आपके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस की जॉब्स, आपके लॉक स्मिथ. तो दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ बिजनेसेस व्हिच आई प्रेफर, व्हिच यू नीड टू कंसिडर बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इन अमेरिका. Okay, so does E2 visa invalidate any other visa category? No, E2 does not invalidate any other category. Okay. Now, do we need to have the name of the company when registered? Yes, that's a very good one. So,
of course, if you do not have a name of the company once you are registering, so what will you register? आप रजिस्ट्रेशन में नेम ब्लैक ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते. यू नीड टू हैव बेसिकली यू नो कंपनी नेम एस्टैब्लिश्ड, और एटलीस्ट आपको सिलेक्शन होनी चाहिए. ओके जी, शेख नुमान, आपकी नज़र में कौन सा बिजनेस ई टू के लिए बेस्ट रहेगा 99% अप्रूवल के लिए, जो आपका एक्सपीरियंस से गुजरा हो? सर, एज आई जस्ट मेंशन, होम सर्विसेज बिजनेस इज वन ऑफ द ग्रेट. इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी कम होती हैं यूजुअली एज कम्पेयर टू द रिटेल. यानी रिटेल में अगर आपका $1.5 से $2 लाख का बिजनेस बनता है, तो होम सर्विस बिजनेस यूजुअली आप 100,000 से नीचे की अमाउंट में भी जो है वो बना लेते हो. तो और इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. और अगर आप फ्रेंचाइजिंग में चले जाओ होम सर्विसेज की किसी फ्रेंचाइज में, देन योर चांसेस ऑफ अप्रूवल आर गेटिंग इवन मोर स्ट्रॉन्गर. तो आप किसी जैसे क्लीनिंग सर्विसेज की फ्रेंचाइज है, या हमारी अपनी cleanables.com के नाम से, thecleanables.com के नाम से, जो कार क्लीनिंग और मोबाइल ऑटो कार वॉश डिटेलिंग सर्विसेज की फ्रेंचाइज है. सो दोज आर द बिजनेसेस व्हिच एक्चुअली मेक योर केस एंड योर चांसेस ऑफ अप्रूवल मच हायर. My wife is Indian born, but the citizenship of the qualified E2 country. Can she be the primary applicant? Uh, okay, if your wife is Indian born, so India is not a E2 country. But if your wife is Indian born with the citizenship, with the Canadian citizenship, then yes, I mean she can be the main applicant. Okay, here comes Roger Tiger says, what is the difference between E1 and E2? Roger, I have just explained the E1 and E2 in the starting of this video in very detail. You can probably go through the video after this live is finished, and you will get to know. मैंने बड़ी डिटेल से E1 जो है वो ट्रेडर वीजा है, E2 इन्वेस्टर वीजा है. इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया. Brother, I have an F1 visa and I'm in States, so can I join US military? I don't know, sir. I'm really sorry, but I cannot comment on this. I don't have an information about it. You probably need to connect with some immigration attorney. Okay. For E2 visa, can I borrow 200,000 US dollar from someone US citizen? I am Canadian. Yes, you can. You can basically borrow the money. You can take a loan. You can take a gift, or from anybody. Basically, as long as जिससे आप borrow कर रहे हो उसका source declare होना जरूरी है. अगर उसका source declared है, आप you can borrow. I'm coming to USA on L1A dependent visa. Welcome, sir. Hassan Sheikh. Very good. Very good. Good to see you. Do you provide consultancy? I mean, that's what I do. I don't know. I mean, if you are already coming on L1A, what kind of consultancy do you need? But yeah, I mean, I do provide to invest money. When it comes to investment consulting or advisory, I'm not an investment advisor. I do provide I do the portfolio diversification advisory, कि आप अपने portfolio segmentations को, business segmentations को, investments को कैसे segregate कर सकते हैं. If that is something with regards to the business, yes, I can definitely help you. But if you need a hardcore investment advisory like the brokerages and the stocks and the digital cryptos and those, no, that I'm not the guy. Roger Tiger, thank you. Really appreciate you. You're welcome, sir. You're welcome. Okay. Now coming back here. Okay, Mr. Chauhan, I'm very thankful to you, Rahil Bhai. You're welcome, sir. I want to ask if I have an established e-commerce store, Shopify in USA, can I apply E2 visa? Yes, sir. I mean, as long as देखिए आपका establish store is a first step, but you need to probably review. We need to audit the business. We need to see कि आपका business currently जो है वो तमाम requirements को fulfill कर रहा है. अगर नहीं कर रहा तो उसमें क्या उसमें additions या subtractions की जा सकती हैं, और अगर कर रहा है तो then yes, we can prepare your application for the E2 visa. Okay, and I have a B1, B2, but I have 30,000 investment. What's the option for me? 30,000 में जी आपके पास I mean you can do the business investments, किसी के साथ partnerships कर सकते हो, but you will not be able to qualify for the visa. Visa के लिए 30,000 is a very less amount of investment until and unless you have some very highly skilled expertise. So then it's a different story. It varies from case to case. But usually as a standard practice, 30,000 is not an standard investment for you.
Asad Ali, how much trucking business from small scale requires investment? Trucking business, mein ji, even if it is a small scale business, so we at least recommend 250 to $300,000 because you need to have at least two trucks, two trailers. Trailers mein trailers ho gaye ya aapke jo bhi flat beds hain ya box trucks hain ya whatever you want to have it. So you need to have at least two of the full units, even if it is a new or used, but you would end up spending at least a good decent $200,000 on each unit. और आपके बाकी business expenses मिला के तो 250 to $300,000 is a decent money which we expect on the trucking business. Jeevan Abbas, can I work as an employee in my own business? Also on E2, can I sell food on a truck? You work on your work as an employee in my own business. I mean, if you have your business, yes, you can work into your business. You can take a salary from the business, not on LLC, but if you are on an S corp, you can withdraw as a salary, or you can withdraw as a the owner's withdrawal. And can I sell food on a truck? Yes, you can sell the food on a truck if you want to make a food truck business. तो आपको एक फूड ट्रक के का एक उसका भी एक अगेन इट्स नॉट दैट कि आप $10,000 का फूड ट्रक लें एंड देन you qualify for a E2. It doesn't work like that. If you want to go for a food truck business, you might need to have couple of those. आप 3 4 5 food trucks लें, different locations पे डालें, एक company बनाएं, then you make a whole food business, then you might qualify for E2. Okay, Zohaib is asking which state is best for the business in your experience. In my experience, I worked in almost out of the 50 states. I think until now, probably more than half of the states I have built businesses for my clients. But for me, as a consultant, if you ask me what is best, what in my opinion, I am based in Virginia because I like the Virginia most, and I like it for my business also. But it's because I am into the consulting businesses, so I like it more. But if you are into the retail, then I would say go to Texas, Florida, New York, New Jersey, Chicago. Chicago is a little bit more, they have a higher crime rate as compared to the other states. So Chicago, I take it off the list. So, but ये जो बड़ी states हैं, any of these, Florida, these बड़ी states में आप कर सकते हैं. But if you want to do the services business, consulting, online, IT, marketing, digital businesses, come to Virginia. How long does it take to change adjustment of status nowadays? The standard procedure time for adjustment of status is 3 months, but usually because आपका limited time period होता है अमेरिका में, so you cannot go for a standard procedures. It's highly recommended that you go for the premium processing. तो premium processing में $2,500 USCIS की premium processing की extra fees है. You pay that money, you get the premium processing done, and in 15 days you get a response. Okay, so thank you for your $100,000 information. Thank you, sir. You're welcome. What is the investment of a car wash segments in cleanables? So cleanables में जो car wash का segment है, we expect a decent $125,000 to $150,000 investment because it's capital intensive. It's a secured asset backed investment. आपके investments का major chunk जो है वो आपकी franchise fees में, आपकी vehicles में, equipments में. It's a steam technology, basically one of the world's latest technology जो हम use कर रहे हैं car wash के लिए. So it's a waterless, almost waterless technology, and it's mobile, it's on demand, it's home service. So yeah, I mean $125,000 से $150,000 की investment है cleanables की franchise के लिए. Okay, I want to start my software consulting. Where do I start? Sunny, if you want to start software consulting, you just start consulting. Honestly, where do you start means, I mean, if you're asking about the locations or the states, so I just said, I mean, yeah, you can go for any of these states. The software consulting should be न्यूयॉर्क में जा सकते हो, डीसी में आ सकते हो, डीसी मतलब वॉशिंगटन, वर्जीनिया, डीएमई का एरिया, आप कैलिफोर्निया जा सकते हो, सिलिकॉन वैली. सो दीज 3 शुड बी योर टॉप प्रेफर्ड स्टेट्स. बट अदर देन दैट, बिकॉज इट्स मोस्टली इट्स अ रिमोट बिजनेस, तो आप कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हो. Can you find a business for clients too? Yes, definitely. We find the businesses as per the client's requirements. So once we get you on board, we work with you. We do, the procedure for working with me is basically हम लोग एक initial consultation which is free of charge. हम लोग एक initial basic introduction call होती है. After the consultation, if you decide to hire, if you decide to move forward,
Then we get on board, we sign our agreements, we take our fees, and then we jump with you guys on an orientation or onboarding call. During the onboarding call हम लोग फिर आपका पूरे बिजनेस, स्टेट, इन्वेस्टमेंट डिस्बर्समेंट्स, टाइम फ्रेम्स और सारा प्रोसीजर्स जो है वो प्लान ऑफ एक्शन जो है तैयार करते हैं कि हाउ एंड व्हाट यू नीड टू डू, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, किस स्टेट में होगा, किस बिजनेस में होगा, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, नेम क्या होगा, ब्रांडिंग कैसे होगी, वो पूरे का पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो डिजाइन करते हैं. एंड देन बेस्ड ऑन दैट प्लान ऑफ एक्शन वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. तो इसी में बिजनेस फाइंड करना, बिजनेस बनाना, अगर आपने बिजनेस बनाना है तो वी बिल्ड द बिजनेस फॉर यू, इस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, उसके सारे प्रोसीजर्स उसका उसका जो सेटअप है सारा वो तैयार करना. बिजनेस फाइंड करना है तो बिजनेस फाइंडिंग से लेके बिजनेस फाइंडिंग, क्वालिफाइंग, ऑडिटिंग, ड्यू डिलिजेंस, एक्विजिशन, उसका हैंड ओवर, टेक ओवर, उसके लीज एग्रीमेंट, लीगल पेपर वर्क, एवरी सिंगल थिंग इज व्हाट वी बेसिकली टेक केयर ऑफ. So we will work with you end-to-end procedures for all. Okay. Okay, just a moment. Okay, guys. Please. Okay, I'll still address all of your rest of the questions. अगर आपके कोई मजीद हैं तो बताइए. Okay. So, yeah, okay, coming back to your question, do you work in Indiana? Yes, sir, I work in all the 50 states. Do I need to start with LLC? Yes, the first step would be to start an LLC. सबसे पहले आप LLC बनाएंगे. LLC बनाने के बाद जो है EIN, फिर बैंक अकाउंट, और फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना शुरू होगा. अगर आप कंसल्टिंग बिजनेस में भी हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ऑफिस बनाएंगे, ऑफिस का स्ट्रक्चर होगा, उसमें फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, स्टाफ, अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वेबसाइट, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स. So those are all of the things. Then staff hiring probably. So those all the things which you basically need to spend, and then you start building your business for E2. Can I open a cab company in USA? I have one in Canada. मनप्रीत सिंह, कैब कंपनी डिपेंड्स. अभी अब बहुत सारी स्टेट्स में, लाइक फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, आई नो फॉर बिकॉज आई जस्ट रिसेंटली एक्सपीरियंस इट. न्यूयॉर्क में द कैब लाइसेंस जो है वो इज बिन स्टॉप्ड. तो कुछ स्टेट्स में स्टॉप है, कुछ में नहीं है. यू कैन, इफ द स्टेट विच यू आर सिलेक्टिंग अगर वो अलाउ करते हैं, यस यू कैन गो फॉर, यू कैन ओपन अप अ कैब कंपनी. मेरे अभी करंटली जो है वो there is a client from UK which I am currently working in Florida for a limousine company. There is a client from Dubai which I am working for the car rental company. So with regards to a transportation company, so you can do cab, the limousine, transportation, all of these services you can do. Okay, Sunny, thank you. You're welcome. Okay. Let's see what else is there. Okay. Now, okay. Okay, Noman name. With the wife E2 visa, husband can work in USA and take the opportunity to have a green card, any availability. Yes, definitely. That's a great route actually. के husband and wife दोनों spouse में से we usually prefer कि जिसका job potential ज्यादा है, he or she should be the spouse. जिसका बिजनेस एक्यूमेन या बिजनेस एक्सपोजर ज्यादा है, he or she should become a main applicant for the business. So for example, अगर आपकी wife she is good in the business, she can become an investor, she can open a business, and you have a job background, so you become a dependent ताकि आपको job visa मिल सके. और उस job visa की base के ऊपर you can find sponsors, you can have a good household income, you can get a green card. All of the options are valid for you. Kashif Chauhan, thank you. You're welcome, sir. Okay, Zohaib Ahmed, is car rental business profitable in USA if we start on E2? Zohaib, I just mentioned, yeah, car rental business basically is डिपेंड. देखो, बिजनेस की कोई भी, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हो तो देर आर टन्स ऑफ स्टोरीज अवेलेबल
for being profitable and as success stories, and there are tons of stories available for a loss story as well. It's all depends on you कि आप कैसे करोगे. Now if you want to go for a car rental business, for example, I assume कि अगर आपका पाकिस्तान में कोई car rental है, hypothetically, आप कार पाकिस्तान में कार रेंटल, आज अगर मैं एज अ न्यू इन्वेस्टर पाकिस्तान में भी आके कोई कार रेंटल नया शुरू करता हूं, तो आई वुड हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन विद एन एग्जिस्टिंग बिग प्लेयर्स. उनके साथ compete करने के लिए मेरे मुझे आई नीड टू हैव दोज रिसोर्सेज, दोज स्किल्स, दोज एक्सपर्टीज, दो इवन द बजट, even investment. If I have those, I can compete with those, no problem. But यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे चूंकि car rentals में भी there is Turo, there is the all the online car rentals available, platforms are available. If you have some USP, then you can definitely grow your business. So basically you need to choose your industry based on what extra value you bring on the table. Okay, so how long it will take to be a palm satisfied? Say to see great ho, nice information. You welcome ji, to see be great ho paji. Okay, how long does it take to be a palm satisfied? Honestly, I'm sorry, I didn't get your point. Uh, okay, how much your fees for a complete E2 process? देखिए जी, फीस मैंने पहले भी बताया कि फीस varies from the business and the scope of services. So the best way would be that you get in touch with the team, and then we, based on your expertise and requirements, we can tell you the fees. Okay, now Rehan Ahmed Godur. If someone has a dual nationality, Pakistani and UK, which country he applied for an E2? The question answers on it in its own self. If you have dual nationality, you have a right to choose any of those. Now, if you ask me comparisons between Pakistan and UK, then I would say apply from UK. That's better. As long as, but remember that if you are from UK, you need to be a UK's current resident, or at least you need to have a residency in the current years in the past. तो ऐसा नहीं है कि यूके सिटीजन और आप रह पाकिस्तान में रहे हैं पिछले 5 7 10 साल से, अब आप यूके सिटीजनशिप की बेस पे अप्लाई करें, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, okay, can I do business with you as a partner because I have a low investment of 30,000? Okay, so 30,000 में मेरे साथ आप क्या पार्टनरशिप के बिजनेस करेंगे सर? आप मुझे I mean I'm open for all the partnerships. Whoever wants to do the partnerships, we are more than welcome. We have I have currently at least more than probably 15 current ongoing projects with me, different businesses, and we are, I mean, we can help you, work with you. Depends कि once we talk to each other, once we understand the scope and the understanding, अगर हमारी settings बैठती हैं, understandings बैठती हैं, we are always open for the partnership. Depends what you bring on the table. So if you are bringing only 30,000 on the table, sorry, then it's not for you, because I don't need that money. The partnership requires a lot more than only the investment. So if you bring your value, your addition, your skills, your expertise, your management, and those kind of things, yes, we can talk about it. Okay, Mr. Faisal, roughly how much, please, estimated? Faisal, estimated basically, with regards to, let's say, for a complete package. Let me break it out to you, all of you guys, because everybody is very concerned about the fees. So fees from the whole, for the whole business setting ups, general, if everything remains in the budget of $100 to $150,000 or below that, or आपका एक standard ideal case है, so we start from $12,000 as a complete package. Okay, Canadians can apply diversity visa. Sir, diversity visa के लिए I'm not the right guy, Mr. LP, because immigration attorneys are the people who actually help you for the who can guide you on DB lottery. So I'm not really sure. I'm really sorry for it. Okay, which US state is better for a restaurant business and retail both? Zoheb, every single of 35 crore की आबादी जो अमेरिका की है ना, every single body has to eat food, right? So irrespective कि आप किसी बड़े स्टेट में है, छोटी स्टेट में है, या किसी भी जो है वो टाउन सेंटर्स में है, wherever you might be, but food business is always there. So हर एक को रेस्टोरेंट में खाना खाना है, हर एक को जो है ना, everybody needs to have a food. So practically all states are good. So for a food business, it doesn't really matter. What matters would be
depending on the one, your investment, and the second, your cuisine. So for example, if you are opening a fine dine restaurant, देन आपको किसी फाइन डाइन लोकेशन पे जाना है, किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में एलीट नेबरहुड्स भी मौजूद हैं और लोकल आउटस्कर्ट टाउन एरियाज भी मौजूद हैं. So if you have a decent budget, you want to go for a fine dine, so you need to choose a fine dine neighborhood. If you want to go casual restaurants or a fast food junk food restaurants, then it's fine. You can you do not necessarily need to be in a fine dine locations. You can go for any local area as well. So food business ke liye, I mean, all the states are equally important. Which US state is better for the restaurant business? Oh, Zohaib, again the same question I just answered. Okay, now, okay, Mr. Asad Ali is asking, can somebody change a business after doing the one they are earlier doing? Okay, so with regards to कि आपने जो E2 का business build up किया, if you want to change that business legally, it is possible, but all what you need to do is you need to provide a justifications and reasonings, and you need to update and report to the USCIS कि आपने पहला business क्यों close किया, because he understand one very technical point. E2 वीजा आपका अप्रूव होता है. अच्छा, एज एन इन्वेस्टर योर कंसर्न इज कि यार अगर मैंने बिजनेस किया बाद में नहीं चला तो क्या होगा. E2 वीजा के लिए वी एज कंसल्टेंट्स वी डू ऑल द लेग वर्क फॉर यू. उस पर पूरी मार्केट रिसर्च होती हैं, एनालिसिस लगते हैं, द बेस्ट ब्रेन्स इन द मार्केट वर्क ऑन योर फाइल एंड वर्क ऑन योर एप्लीकेशन टू मेक श्योर कि जो बिजनेस बना रहे हैं वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, वो ग्रोथ वाला बिजनेस भी होगा, एंड इट हैज अ गुड पोटेंशियल. Now, once we justify this to the embassy that okay, ये business एक बड़ा successful business है और आने वाले 2 3 4 साल में हम इसको grow करेंगे, because I have that skills to grow that business, तो मैं इसको grow करूंगा, तो then you get the E2 visa. So one, it's not very common or very easy to fall behind that business. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, ऑफ कोर्स बिजनेस फेल भी होते हैं, बट इट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन एज लॉन्ग एज अगर आपको एक्सपर्टीज है, आप बिजनेस मैनेज कर लोगे तो आप उस बिजनेस को सर्वाइव कर लेते हो. बट स्टिल इफ यू नीड टू चेंज द बिजनेस, तो यू वुड गो बैक टू द USCIS. Then we have to give them the reasoning that the initial पे हमारे business में which we projected, which we forecasted and anticipated, अब वो नहीं चल रहा, then why it is not working out, and then we need to prepare the new business plan for the new business, and yeah, we can change it. It might sound a little complicated, but it can happen, to be very honest. Canadians can apply diversity. No, I have already addressed that. Okay. Jeevan, is there any way to be allowed to visit outside on E2 if you do the change of status? No, there is no way. I mean, it's not that you are not allowed. You can travel at any point of time. But the moment is once you travel, once you exit of America, even you go to Canada, you exit from America, you cannot come back because your visa is expired. I mean, your status is expired. Okay, Udesha says, can one open an LLC and operate a business remotely, then reinvest the profits into the business, and this investment regarded as a part of your E2 investment, which is used for E2 application? Udesha, the short answer is, this is a very sensitive and technical things. The short answer is yes, but the point of concern is that you need to have a very close, airtight, monitoring on doing these kind of transactions. आप अपने profits को reinvest कर सकते हो if it is well planned and well managed way of doing your books of accounting. So in straightforward में it would not be very straightforward way. Let me put it that way. Okay, sir, I am a real estate agent in Islamabad, have $100,000 investment. My age is 23. Mashallah, Mas Khan. So, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. At the age of 23, if you made this money rather than taking it from your parents, $100,000 means 3 crore रुपया. You have saved it. Congratulations. Now, if you want to do you are considering about E1 and E2, I'll say अगर आपने real estate का काम किया तो then you come and do the property management here in this budget, you should be good to go. Maz Khan, can you guide me? Yes, Maz, I just told you. Yes, you can do. Okay, Naman name. What is the E2 visa family
With the E2 visa, family can travel out of USA. If yes, then how long it will be legal? For example, 1 month out of USA. नहीं, E2 visa जब आपको मिल जाता है, then you are allowed to travel as much as you want. I mean, you do not. There is no limitation. There is no restriction. So आप you can stay outside the USA as much as you want, and you can stay inside the USA as much as you want. Okay, guys. So I think now I'll just take 5 more minutes. It's a good long time. So 5 more minutes, and then we'll just probably end this conversation आज के लिए, so that we can move to the things. Okay, now Zaheb, let me take couple of more questions, and then we should be good. Your business in What business, in your opinion, is safe and easy to start in USA? I just mentioned the home services business. Home service में cleaning का business, lowest investment, highest potential, highest growth, safe investments. If you go for franchising, even better. This is one of the most lucrative industry for the freshers, especially, I would say. Okay, what type of business is better for E2 to move US easily? Home service. Please help me out. I want to change status and become your company franchise. I will manage it with your guidance as a partner. Awesome. Sir, please connect with my team and explain what you bring, what you can do, how you can manage our franchise. And we will have to talk. No problem. Khan, can we use existing funds? Existing funds? Sorry, I didn't get you. Existing funds means कि अगर आपने कोई existing investments business में की हुई है, again, usually, I mean, it depends, but yes, you can. But if you have some other meaning of existing funds, so please ask me. Existing funds in USA. What is the easy route to green card on E2? What is the next visa to shift on a green card directly? ग्रीन कार्ड डायरेक्टली, अदर देन द स्किल्ड वीजा में आपका EB2 EB3 स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट वीजा आते हैं, उसमें आपको स्पॉन्सरशिप्स चाहिए, दैट इज अ डायरेक्ट ग्रीन कार्ड राउट. और बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट बेस पे EB5 इज अ डायरेक्ट ग्रीन कार्ड राउट विच रिक्वायर्स $1.05 million, और इफ यू गो फॉर स्पेसिफिक एरिया तो $800,000. Existing funds in USA. Yes, अगर आपके funds legitimately with the money trails and proof मौजूद हैं अमेरिका में, तो yes, you can definitely go for existing funds too. Okay, and last 2-3 questions, and guys, then we would be done. Okay, E2 investors, dependent wife or husband can travel work. Yes, they can travel, and yes, E2 investors का जो dependent है, they can do business, they can do the job, they can do employment, whatever he or she wants to do. Employment जो spouse है, उसके पास तमाम rights मौजूद होते हैं. How to book appointment with you? You are on the TikTok. Just go to the bio, click on the link in my bio, and you will find the basically the links to book an appointment. I'm a green card holder. How much cost me a laundry business? Rocky, if you are already a green card holder, you want to do a business, the laundry. There is no standard price. I can tell you that the laundry cost you $5 per kg. So it doesn't make a sense, right? So laundry businesses are good businesses, but it would vary. बिजनेस के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से, उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या मार्जिन है, कितना स्टाफ है, उसकी कितना लंबा टेन्योर है, कब से वो बिजनेस चल रहा है, उसके टैक्स रिटर्न्स कितने क्लीन है. बट ऑन एवरेज जो लॉन्ड्रो मार्ट्स हैं, जो ऑटोमेटेड या कॉइन बेस्ड लॉन्ड्रो मार्ट्स हैं, you expect them little bit higher because capital intensive businesses हैं, उसमें जो है वो machines लगती हैं, and it's passive, so it's highly in demand. तो वो आपको तकरीबन 2-2.5 लाख में, 1.5 लाख में मिल जाता है एक रीजनेबल लॉन्ड्रो मार्ट. There are some in $500,000 also, there are some in $70,000 also, but average price में एक अच्छा बिजनेस जो है लॉन्ड्रो मार्ट का, वो आपको $1.5 से $2 लाख में मिल जाएगा. Okay.
lottery visa portal open now, and can Pakistani Canadian apply? If you're Canadian, you can apply probably. I don't know. I mean, I'm not again for a lottery and DV visas. I'm not the right guys. So I don't want to see. Understand that my scope is only limited towards the expertise which I have, and my expertise fall anything and everything with regards to the business and the business preparations for your visa categories. So मैं attorney नहीं हूँ, तो I don't want to tell you or comment you on something which I'm not a good at. So please excuse me for that. I have sent you an email to your team. It's been a while, no reply. It's very, very sad, my dear. I don't get your name here. It only says user 123. Okay, so there is a email on the. If you go to the YouTube, there is a link and there is an email. You can probably, or you can write it down. Startup at startupbusinessbureau.com. Write an email, or even if you want to cc startup business bureau at gmail.com. So startup business bureau at gmail.com, and I will personally ensure that I will take a look at the email. Please forward me जो आपने पहले भी mail forward की थी. I'll take a look at it. Thank you for highlighting it, and I'll talk to the team and I'll make sure that you get a response immediately. So startup at startupbusinessbureau.com and startupbusinessbureau at gmail.com. So send your email right now after this call. The first thing I promise you, I'm gonna look at your email. Okay, and what is the route to the green card? Okay, so guys, just last दो सवाल. Okay, तीन. Okay, there are still a couple of more left, so I'll take only three more and then I'm done. Thank you. Okay, so Naman, 150,000 complete time to process. I have applied B1 B2 interview in January 24. Good. January 24 में you take B1 B2, come here, build up your business. 4-5 months में you would end up building a business, and then you can apply for E2. So 5 से 6 महीने का complete process है. Please mention your park team number. Yes, park team number जो है वो okay, let me actually say it here also. It is available on my social media as well, but let me okay, I'm a little bit slow, so just excuse me for finding the number. मुझे numbers थोड़े याद नहीं रहते यार. पैसों के नंबर याद रहते हैं, पर टीम के नंबर नहीं याद रहते. Okay. Okay, guys. So the number is 0332 000 7660 7661 7662 766345. All of the series is ours. 0332 000 7660. All right. So please connect with the team, and we can handle your things. What will be the duration of E2? Because in Google I read 5 years for Pakistan. Yes, in Google is a good instructor. 2 years for the first. The initial जो पहला वीजा मिलता है पाकिस्तानी को वो पहला 2 साल का, and then it is 5 years. Okay, and Zohaib Sab sir, your videos are mashallah so informative. Thank you so much, Zohaib. Thanks, sir. Naman, thank you. How many change to get E2 visa? How many change? I think Bilal Akram, you mean to say how many chances to get E2 visa? Bilal, when it comes to the chances on e-commerce or any business categories, it's very difficult for me to tell you how many chances. There is no 13.99% chances of getting visa, for example, just to hypothetically. So the chances are, as I mentioned, the embassy and the US authorities have given a very clear instructions. वेरी वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस. तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस पे जब हम बिजनेस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बनाएंगे, द चांसेस ऑफ गेटिंग द वीजा अप्रूव्ड इज एक्सट्रीमली हाई. सो इट डिपेंड्स. प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन वी स्टार्ट डूइंग कॉर्नर कटिंग्स, हम बीच में जुगाड़ू तरीके लगाते हैं, कॉर्नर कटिंग्स करते हैं, शॉर्ट कमिंग्स करते हैं, देन वी गेट आवर वीजा कॉम्प्रोमाइज. बट इफ वी डू नॉट डू दैट, देन वी आर वी शुड बी गुड. Okay, last one, Mr. Osama Hamid. This is the last question which I'm going to address. Okay, yeah. So, any options for Canadian PR holders to migrate to USA? Osama, Canadian PR holder is not a category to consider. It's good for you to stay in Canada if you have a PR in Canada. Moving to America has nothing to do with your Canadian PR. It has everything to do with your current citizenship. अगर आप पाकिस्तान से हैं
तो यस यू आर क्वालिफाइड फॉर E2. अगर आप इंडिया से हैं और कनाडा के पीआर होल्डर है तो देन यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर E2. तो यू नो द पीआर स्टेटस डज नॉट change the fact, but it's all about your country of citizenship and the passport which you are carrying. All right, guys. So that was all for now. It's a quite lengthy session. Thank you so much. You guys have been so active, and thank you for bearing and tolerating me. आप लोगों ने बड़ा साथ दिया. Very relevant questions you guys has asked, and I'm trying to address and as much as I can. अगर किसी का कोई मिस हो गया क्वेश्चन तो please excuse me for that. You can write it to us for any further discussions. All of my channels are available with you. My website is with you. Startupbusinessbureau.com. The best and ideal way would be to just go to the websites और गो टू द अपॉइंटमेंट लिंक्स. मुझसे आपने बात करनी है, मेरी टीम से बात करनी है, डिस्कशंस करनी है. माय फर्स्ट कंसल्टेशंस आर फ्री, सेकंड कंसल्टेशंस आर पेड. आई डो नॉट टेक रिपीट कंसल्टेशंस फॉर फ्री फॉर श्योर. उसमें मेरा और आपका दोनों का टाइम सेफ होता है. तो जस्ट गो विच एवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू गाइज आर ऑन. गो ऑन द लिंक्स. एवरी प्लेटफॉर्म पे सब पे लिंक्स मौजूद हैं. किसी भी लिंक पे चाहिए अपॉइंटमेंट्स बुक कीजिए. Let's make your American dream come true. Thank you so much, guys. Thank you. Assalamu alaikum. Okay.